Hello dear students, welcome you all for the today's video lecture. Now in this video lecture we are going to discuss about the another topic of your biotechnology, that is the transgenic animals. We can view in this topic, that is transgenic animals. What is transgenic animal and how they will be useful in case of biotechnology? Now in this video we are going to discuss about this. Okay, let's start. What is transgenic animal? Transgenic animals. So transgenic animals माने कौन कहला? The animals which carry the foreign genes, the animals that we are selected to introduce the foreign gene. What do you mean by foreign gene? The outer gene or the required gene or the functional gene which will be inserted into the organism, generally some microorganisms or the animals. जो animals मानक देहरे हम एटा को introduce करिबा से जो recombined DNA टाको, these animals are called as these animals are called as transgenic animals. तो कौन कहला देखो transgenic animals? Animals which carry the foreign gene, जो animals कौन carry करूची the foreign gene जोटा के outer gene जोटा के हम introduce करिचे, the functional gene which will be inserted. The animals which carry the foreign gene are called as transgenic animals. These animals after receiving foreign gene produce highly valuable materials. आमे जिमिति देखिले the biotechnology process or the genetic engineering process will be used in our agriculture field, and in case of animals purpose, in case of medicinal value. Now these are the animals which will be these are the selected animals. These animals have the defective gene will be replaced and the functional gene will be inserted into their body. These animals are called as transgenic animals. Generally, these transgenic animals, after inserted the foreign gene into their body, they will be produce the highly valuable materials that for our need. आमर आवश्यकता पाई जेउ सब आवश्यक पदार्थ बा जेउ जिंसटा हमको आवश्यक पडुथला बो जदि किछि डिफेक्टिव हेछि बा डिजीज हेछि सेटा जदि हम रिप्लेस करिया पई चाहछे बा जीन डिजॉर्डर अछि सेही जो प्रकार डिजीज जाको रिप्लेस करिया पई बा जो जदि गुटे प्लांट देयर इंसर्टेड करिचे ताहाले तार प्रोडक्शन बढ़िबा पई तो जेउ एनिमल्स मानु हम यूज करूचे सेही सब एनिमल्स मानु हम जनरली कोन बोली कोचे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोली कोचे. तो नेक्स्ट असला हाउ to produce transgenic animals. एई जो transgenic animals मानु को जो animals मानु देहर की foreign gene ता introduce करिबा ताको हमें transgenic animals बोली कहले. एई जो transgenic animals माने की भलिया तयारी होंती बा प्रस्तुत होंती तो देखिबा वर्तमान now how to produce the transgenic animals. The foreign genes are inserted into the genome of the animal using the recombinant DNA technology or by the genetic engineering. तो कौन कहला जो foreign gene टाको the foreign gene which will be inserted into the animal body, the foreign gene are inserted into the genome of the animal using the recombinant DNA technology. आमे DNA recombinant DNA technology बा genetic engineering process टी आमे यूज करी वर्तमान आमे सेही जीन टाको आमे वर्तमान इंट्रोड्यूस करिया जाउछे गोटे एनिमल्स देहरे. Either the animal will be a cow or a pig or a fish or any type of organism. So the production of the transgenic animal includes एई जो transgenic animal production करिवा पई बोली कोन कोन सेही प्रोसेस जाक अछि that I can explain each and every. तो देखो कोन कहले the first one is the location, identification and separation of the desired gene. The desired gene or the foreign gene which will be inserted into the animal body, that will be isolated. ताको हमें बाहर करिवा isolate करिवा. तो first असला that is the location को जगह रे अछि तार correct identification and separation of that particular desired gene. The first step. The next step is the selection of proper vector. That means the vector who can carry out जे कि सेटा को नबो सेही जो vector टाको हमें generally हमें कोन करिया गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जोटा कि सेही vector हिसाब रे रोल ता तार प्ले करे सेटा को हमें सिलेक्ट करिया. तो फर्स्ट हमर कोन आसला the selection of the location, identification and separation of the desired gene. In the next that is the selection of the proper vector. Proper vector ta में mainly the microorganism or by the bacteria
बैक्टीरिया को आम चूज कले जोटा एज ए वेक्टर हिसाब से प्रॉपर वेक्टर को आम सिलेक्शन कले इन द थर्ड स्टेप दैट इज द डिजायर्ड जीन इज कंबाइंड विथ द वेक्टर सेई जो डिजायर्ड जीन टा को आम कोन करबा कंबाइन करबा का संगे सेई वेक्टर संगे आम कंबाइन करबा बुझि पालो एई जो वेक्टर टा को आम सिलेक्टेड करथिले सेई वेक्टर देहरे आम कोन करबा जो डिजायर्ड जीन जोटा कि आम आवश्यक रहिछि सेई जीन टा को ता संगे कोन करबा कंबाइन करबा बाय गिविंग ए स्पेसिफाइड एंजाइम next step introduction of the transport factor in a cell tissue or embryo that vector जो vector टा की carry कला सही recombinant DNA टा को सही vector टा को हमें कौन करिया that will be introduction of the transport vector in the cell either से vector टा को हमें cell रे introduce करते और tissue or by the embryo next that last step is the verification of integration and expression of the foreign gene एई जो foreign gene insert कला परे तार expression को भलिया तार physical changes बा कोन तार development आछी कोन तार changes आछी से सब हम observation करिवा verification of transgenic the verification of the integration and expression of the foreign gene in the transgenic tissue or the animal एई जो transgenic animal बा transgenic जो animals द्वारा हम जो vector DNA टा को जोडा हम inserted करछे जो vector animals टा को सेटा को हम कोन करिया भल से हम ताको प्रॉपर्ली एग्जामिनेशन करिवा से कोन तारो इफेक्ट्स देखौछ so this is the how we can produce the transgenic animal in the simple word the transgenic animals means is that if the animal which will be selected to introduce the foreign gene that will be called as transgenic animals either some example of transgenic animals are fish sheep cow and some other animals so what are the advantage of the transgenic animal transgenic animals manankar advantage kon rahila generally they will be helpful for the biological products they will produce a different type of biological the first one is the production of the different type of biological products like different type of medicines vaccines that will be required by the population for the different type of diseases so kon kala first one is the biological products and some certain proteins and amino acids that will be required like some insulin human insulin humulin as a प्रोड्यूस हेइथिला तो ए सब जका हमर कोन होची ए जो टेक्नोलॉजी करबा द्वारा एटा गुटे एडवांटेज मिलुची इन द ईयर ऑफ आई कैन गिव वन एग्जांपल अबाउट दिस द इन द ईयर ऑफ 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ हमें कोन करथिले 1997 मसिया इन द ईयर ऑफ 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ produce the human protein and rich milk जोटा कि हमर ह्यूमन को जो प्रोटीन रा आवश्यकता अछि अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी वेट हमर बॉडी वेट जते अछि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म पय बोली कि सेटिक अमाउंट रो प्रोटीन आवश्यक पड़े इन द डेली बेसिस तो एई जो हमें कोन करथिले ट्रांसजेनिक एनिमल्स बा काउ गोटे भलिया तयारी करथिले जो काउटा कोन कला जो प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क जो मिल्क से प्रोड्यूस कला सेई मिल्क रे कोन कला ह्यूमन को जो प्रोटीन रा आवश्यक अछि सेई प्रोटीन ता देहरे कोन रहला तार अमाउंट ता अधिका रहला तो देखो कोन कोइ गुड एग्जांपल इन 1997 the first transgenic cow produced the human protein and rich milk that is the 2.4 gram per liter तार जो प्रति लीटर रे in the every liter of the milk they have the contain 2.4 gram of human protein and rich that means the milk contain the human alpha lactobumin hela nai ei jo human alpha lactobumin this type of protein will be present that is approximately 2.4 to 2.5 gram per liter this is the main advantage that is the production of the biological products next in the case we can produce the different type of vaccine for our safety different type of vaccine produce kale the vaccines are also different types like first generation vaccine second generation vaccine and the third generation vaccines but the different type of vaccines that will be purified in the year of the 1790 in the year of 1790 Edward Jenner the scientist who can produce the vaccine for the smallpox that is the first generation vaccine and they have the less therapeutic effect but in the next generation in the after some days or the after some years like in the year of 1800 in the year of 1879 the scientist the great scientist the Laus Pasteur can produce the different type of vaccine for hepatitis B and the other diseases like cholera these vaccines are called as second generation vaccine तो हमें कौन करते in the year of 1790 रो हमें कौन करते vaccine our safety primarily production करिया start करते now it is the advanced technological vaccines they have the more therapeutic effect these are produced and these are called as edible vaccines
तो এই जो वैक्सीन जाके हमें प्रोड्यूस करि पारछे এই जो एनिमल्स मानको यूज करबा द्वारा नेक्स्ट वन इज द chemical safety for testing हमें कोन करते डिफरेंट केमिकल्स वी कैन यूज्ड फॉर आवर सेफ्टी पर्पस फॉर द थेराप्यूटिक इफेक्ट्स इन आवर बॉडी तो एटा कोन करते केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग हमें मध्य करि पारछे एंड द नेक्स्ट वन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव part that means if a person will be suffering from the any type of genetical disorder जदि गोटे person हमर genetical disorder like thalassemia color blindness or hemophilia Klinefelter syndrome that will be discussed in our genetics topic if a person will be suffering from these type of genetical disorders then we can replace that gene and we can introduce it into a particular that gene or the functional gene into their body so these are the animals they will be helpful for the production of the different valuable kinds and the technology that will be used that is known as biotechnology or the genetical engineering so this is all about your transgenic animals after the transgenic animals this is the most important one and it will become in your different type of examinations in your short notes after the another short note is that for the today's that is the gene therapy what do you mean by gene therapy gene रे जदि हमें किसी ट्रीटमेंट करछे ताहले हमें ताको कहछे gene therapy simple words रे so if we can replace the defective gene जदि हमें defective gene टाको replace करिके and in that defective gene if we can introduce a functional gene that is called as gene therapy that process is known as gene therapy से जो process टा हमें कोन बोली कहछे gene therapy बोली कहछे तो कोन कहली gene therapy माने जदि कोनोसी व्यक्ति रो बा गोटे पेशेंट रो जदि जीन टी डिफेक्टिव ताहे बा जदि गोटे पर्सन जेनेटिकल डिसऑर्डर रे सफरिंग होई अछि then we can replace that particular gene that will be defective जो जीन टा के हमर डिफेक्टिव हेछि सेही पर्टिकुलर जीन टा को हमें रिप्लेस करिबा by a functional gene गोटे फंक्शनल जीन द्वारा ताको हमें रिप्लेस करिबा सेही प्रोसेस टा को that process of replacing the defective gene by the functional gene that process is known as gene therapy से जो प्रोसेस टा को हमें कोन बोली कहछे जीन थेरापी बोली कहछे तो देखो जीन थेरापी माने कोन लिखला द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर बाय मैनिपुलेटिंग द जीन इज कॉल्ड एज जीन थेरापी जो मैनिपुलेटिंग जीन करी के हमें जो जेनेटिकल डिसऑर्डर टा को जोडा के हमें रिप्लेस करूचे बा जीन टा को बाहर करूचे सेही प्रोसेस टा को हमें जीन थेरापी बोली कहू इट इज अ टेक्निक एटा हला सेही गोटे टेक्निक बा बायोटेक्नोलॉजी बा जेनेटिक इंजीनियरिंग काल टेक्नोलॉजी बाय व्हिच इट इज अ टेक्निक of genetic engineering to replace the faulty gene देखो कोन कहला रिप्लेस हमें कोडा करबा जो faulty gene बा डिफेक्टिव जीन जोटा कि जो द्वारा से प्रॉब्लम टा होछि बा से डिजीज टा कोज होछि से जीन टा को हमें रिप्लेस करबा दैट faulty gene will be replaced by a normal healthy functional gene से जीन बदल रे हमें कोन करि परिबा गोटे नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन को सही जो डिफेक्टिव जीन बदल रे हमें ता पाखरे कोन कर दवा रिप्लेस कर दवा सही जो टेक्नोलॉजी बा जो प्रोसेस टा जो प्रोसेस रे कि एई प्रकार टेक्नोलॉजी टा हमें बा जीन टा रिप्लेस करूचे सही प्रोसेस टा हमें कोन बोली कहते जीन थेरापी बोली कहते जनरली इट इज ऑफ टू टाइप्स द जीन थेरापी इज ऑफ टू टाइप्स बारंबार कहली माने दिस टेक्निक इज ऑफ टू टाइप्स दैट इज द फर्स्ट वन इज द जर्म लाइन जीन थेरापी एंड द अनदर वन इज द सोमैटिक सेल जीन थेरापी द फर्स्ट वन इज द कोन कहली germ line gene therapy and the next one is the somatic cell gene therapy what is germ line gene therapy the germ line genes like ovum or the sperm that will be produced from the germinal epithelial of the human body these are called as germ line gene therapy and the somatic cell gene therapy what is this the main cell which will be produce the germ cells that are called as the somatic cell or the main functional cell तो देखो कोन कहला in germ line gene therapy the germ cells that is এই जो germ cells देखो जोटा कि रहिला in case of male it is sperm and in case of female it is ovum तो कोन कहला in the germ line gene therapy the germ cells that is the sperm and ovum are modified sperm एवं ovum का हमें कोन करिबा modified करिबा by the introduction of functional gene सेही जो डिफेक्टिव जीन बदल रे हमें कोन करिबा एई जो स्पर्म आ ओवम का हमें कोन करिबा रिप्लेस करके सेही जो भीतर थिबा जीन मानु को रिप्लेस करके हमें ता बदल कोन करिबा गोटे फंक्शनल जीन ता को इंट्रोड्यूस करिबा इवन इन केस ऑफ जाइगोट आल्सो which are ordinary integrated into their genome जोटा कि से माने कोन करिवे ऑर्डिनरली से मानकर जीनोमी को से माने रिप्लेस करिवे बा सेटा को जो प्रोसेस ता एई जो प्रोसेस ता को हमें कोन बोली कहते जर्म लाइन जीन थेरापी बोली कहते द लास्ट वन इज द
somatic cell gene therapy, or the second one is the somatic cell gene therapy, the gene which will be introduced only in the somatic cell. ei jo gene ta ku jota ki ame main somatic cell re replace କରୁଛେ ସେଇ ପ୍ରକାର replacement ଟାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ somatic cell gene therapy ବୋଲି କହୁଛେ। ତ gene therapy ମାନେ କଣ जो defective gene ଟାକୁ ଆମେ replace କରି ତା ଜାଗାରେ ବା ସେଇ gene ବଦଳରେ ଆମେ जो functional gene ଟାକୁ introduce କରୁଛେ ସେଇ process ଟାକୁ ଆମେ gene therapy ବୋଲି କହୁଛେ। ଏବଂ ଏହି जो gene therapy दुईटी process रे ଆମର होची बा दुईटी टाइप्स रछि गोटा आसले हमर जर्म लाइन जीन थेरापी आउट आसे हमर सोमैटिक सेल जीन थेरापी। जर्म लाइन जीन थेरापी जनरली कोन हुए हमर जो जर्म सेल्स रहउछि दैट इज इन केस ऑफ मेल रो इटा हला स्पर्म एंड ओवम तक हमें कोन करछे रिप्लेस करूछे, और इन केस ऑफ जाइगोट आल्सो इट विल बी रिप्लेस्ड एंड इट विल बी कैरी आउट बाय इंटीग्रेटेड इनटू देयर जीनोम। But in case of somatic cell gene therapy, the main in the somatic cell the gene will be replaced. Somatic cell रे थिबा gene टाको हमें कोन करबा replace करबा by this process. So this is all about your transgenic animals and the different type of gene therapy. This is the most important topics or the short notes of your biotechnology process. So you make it note. Okay. Thank you, students.